Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will be start computer online lecture number 1. Chapter number 1, the nature of technology, computers around us. I am your computer teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. हज़रत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है झूठ बोलना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, ना ही संजीदगी में और ना मज़ाक में। फिर यह आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। अल्लाह ताला हमें भी सच बोलने की तौफीक मरहमत फरमाए। और उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप सब लोग नमाज़ों का एहतमाम कर रहे होंगे और रोज़ाना अपना कुरान पाक का सबक भी ज़रूर पढ़ते होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। Past and present. Technology then and now. Devices and gadgets that we use today were radically different back when they were first invented, introduced or popularised. Books. 1,400 physical books would weigh about £1 each. That's about as much as half of a car. Kindle. The cheapest version of this electronic reader can hold that many books in digital form. Ford Model T. The first consumer automobile, introduced in 1908, produced 20 horsepower and had a top speed of 45 miles per hour. Ford GT. The 2017 Descendant has evolved into a supercar with 600 horsepower and speeds in excess of 200 miles per hour. Television. The 1948 Admiral Model 19A12 TV set had a 7-inch black and white screen with a resolution of 653 by 499 pixels. UHD TV. Today's 4K ultra-high-def TVs have minimum resolutions of 3,840 by 2,160 pixels. Videocam. The Super 8mm film cameras produced by Kodak in 1965 had film cartridges that recorded up to 2.5 minutes at 24 frames per second. High-def video recorder. Can record 1080p video for up to 4 hours and 21 minutes at 30 frames per second. Laptop. The first true portable computer was called Osborne 1, built by Adam Osborne in 1981. It weighed 24 pounds, had a 5-inch screen, and cost $1,795. Compact ultra-portables. Laptops circa 2016 are sleek, lightweight, have 13 to 15-inch touchscreens, blazingly fast processors, and cost $1,000 or less. Mobile phone. In April 1973, Motorola researcher Martin Cooper made the first mobile telephone call using a device that weighed 1.1 kilos and measured 23 centimeters long. It had a talk time of 30 minutes and took 10 hours to recharge. Smartphone. There are nearly 150 mobile phone manufacturers in the world today,
who produced the latest iteration of this device, which is small, light, thin, and is virtually a carry-anywhere computer. ENIAC. Built in 1946 by Pennsylvania University scientists, the Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, was a 30-ton behemoth with over 17,000 vacuum tubes, 70,000 resistors, and 10,000 capacitors, filling up a प्यारे बच्चों, ये कीवर्ड्स आपको सामने जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं स्लाइड पर, ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर लिखे हुए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चैप्टर पढ़ने के साथ साथ इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। अब मैं ये कीवर्ड आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आप मुझे पढ़कर बताएंगे। कीवर्ड्स नंबर 1 microprocessor, number 2 robot, number 3 sensors, number 4 storage device, number 5 data file, number 6 backup file, number 7 flash drive. प्यारे बच्चों, हम फिजिकल क्लासेस में इस चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूं। हम इसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिखें, समझें और याद करें। क्वेश्चन आंसर। तो Question number 1, how many types of computer are there? कितनी किस्में होती हैं कंप्यूटर की? कह रहे हैं बताएं कितनी किस्में होती है कंप्यूटर की? आंसर, there are 4 types of computer. कंप्यूटर की 4 इकसाम होती है। कौन कौन सी हैं? अब ये देखिए। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फ्लैश ड्राइव और यूएसबी? इस सवाल में कह रहे हैं कि यूएसबी और फ्लैश ड्राइव क्या है? आंसर, यूएसबी और फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव are often used for storing data backup and transferring computer files. इसमें ये बात बताई जा रही है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव अक्सर डेटा को बैकअप करने और कंप्यूटर में ट्रांसफरिंग यानी मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर रोबोट्स? रोबोट्स क्या हैं? आंसर, रोबोट्स आर मशीन्स guided and controlled by computer. तो रोबोट क्या है प्यारे बच्चों? रोबोट एक ऐसी मशीनें हैं जो कंप्यूटर के जरिए हिदायत और कंट्रोल होती हैं। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सामने आपके, ये फ्लैश ड्राइव और यूएसबी है, और ये देखें आप, ये रोबोट की एक पिक्चर बनी हुई है और ये यहां लिखा हुआ है रोबोट। क्वेश्चन नंबर 4,
What are the uses of computer in library? इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है? Answer: in libraries, computers are used in the libraries for the following: maintaining the database of all books available in the library, keeping record of issue and return of books. इसके आंसर में ये बात समझाई जा रही है कि लाइब्रेरी में दस्तयाब यानी अवेलेबल यानी दस्तयाब किताबों के आदाद शुमार को बरकरार रखने और किताबों की वापसी का रिकॉर्ड रखते कंप्यूटर के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक में एक बहुत खूबसूरत कंप्यूटर की डायग्राम बनाएं, पिक्चर बनाएं और उसमें फिर इसके जो पार्ट्स हैं वो शो करें। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। किसके पार्ट्स हैं? ये कंप्यूटर के। तो इस तरह आप अपनी कॉपी में भी ये फिगर बनाइए, कंप्यूटर की डायग्राम बनाइए और इसकी फिर इसके पार्ट्स लिखिए इसके। This is your home assignment. Dear children, write all questions and answer clearly in your computer notebook. Jazakallahu khair.